Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. So, in this session, we are going to continue with our discussion based on IA and IFS mixed question, right? So, I hope you guys are doing well with your exam preparation. आशा करते हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, ठीक है? Now, very few days are remaining, only 1 week basically, ठीक है? So, इस particular उसमें जितना ज़्यादा आप go through कर सकते हैं. Now, I'll say कि पूरा अगला एक वीक आपको डिवोट करना पड़ेगा IN IFS को, और जितना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं उतना ज़्यादा कीजिए. एंड कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं IN IFS के अंदर. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर फंडामेंटल्स एज वेल, राइट? तो उस पार्ट को भी आपको रेगुलर बेसिस पे कवर अप करना है, ठीक है? तो गाइज स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. सो क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चन. So quickly go through the question and submit your answers in the comment section. So arrange the following events in chronological order that mark significant points in the evolution of foreign exchange market in India. So कल भी हमने एक बार बात किया था इनके ऊपर, ठीक है? Like similar type of questions. हाउ टू अप्रोच दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट? सो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका इसको मेंशन करना है, फर्स्ट टू द मोस्ट रीसेंट, ठीक है? सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ था और अभी मोस्ट रीसेंट कौन सा हुआ था. सो इफ यू गो थ्रू दीज पर्टिकुलर वन, शिफ्ट टू मैनेज अ फ्लोटिंग रेट सिस्टम. देन वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम. सो इट वाज इन 2004, राइट? पहला, अगर हम इस पे जाते हैं, ठीक है? दूसरा, abandonment of fixed rate system and introduction of LERMS, liberalized exchange rate management system. So it got introduced in 1992. So obviously ये पहले आएगा, इससे पहले, ठीक है? Foreign Exchange Dealers Association of India, it was get established in 1958. तो अभी तक का सबसे पहला ये होने वाला है, ठीक है? Then fully convertibility of Indian rupee on current account. So it was during the 1991-92 reforms, ठीक है? So आपका न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान आपका ये हुआ था, ठीक है? सो इट इज 1991-92, ठीक है? So if we see all the five areas, so first will come 1958, which is establishment of Foreign Exchange Dealers Association of India. That means आपका जो आंसर है दैट विल स्टार्ट विद ऑप्शन 4, ठीक है? अब ऑप्शन 4 से स्टार्ट हो रहा है पहला ऑप्शन, ऑप्शन 4 से स्टार्ट हो रहा है दूसरा ऑप्शन. सो एलिमिनेट दीज टू, ठीक है? तो ये दोनों का एलिमिनेशन क्लियर कट है, ठीक है? नाउ आफ्टर दिस वी हैव fully convertibility of Indian rupee on current account. So means 5, 4 के बाद आपका 5, ठीक है? सो ये एलिमिनेट हो जाता है. सो व्हाट विल बी योर आंसर? ऑप्शन 2 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? एंड अगर आप जैसे इस पे कंफ्यूज है, ठीक है? सपोज दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस ऑप्शन 5, तो हम यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है LERMS 1992. दैट मीन्स दिस विल बी द थर्ड, ठीक है? तीसरे नंबर पर हमारे पास ये आना चाहिए, ठीक है? थर्ड आपका तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है? सो अगर ये भी आपको कंफ्यूज करता है तो आपका दूसरा LERMS 2004 लिखा हुआ है, विच इज द लास्ट इवेंट, ठीक है? LERMS कौन से नंबर पे होना चाहिए इसमें, इस सीक्वेंस में लास्ट पे होना चाहिए, ठीक है? सॉरी, LRS स्कीम, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम. सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? सो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे. एंड डू यूज लॉजिक, ठीक है? इस तरीके से अगर आप थोड़ा बहुत लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, राइट? So Foreign Exchange Dealers Association of India was established in 1958 as an association of banks that deal in foreign exchange in India as a self-regulatory body. This was the first major step. तो आपका फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज सिमिलर लाइक योर IBA, ठीक है? सो फॉरेक्स से रिलेटेड आपका जो डीलर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना, या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं आपका उनके लिए रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करना, ठीक है? या कहीं ना कहीं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको RBI या गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है? सो दैट इज द वन. फुली कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रूपी. सो it is mentioned 1994 here, but it is little bit doubtful because it happened with the
लिबरलाइजेशन प्रोसेस इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि इससे पहले आपका एलईआरएमएस मार्च 1992 आपका आया था, ठीक है। Then this and the final one is LRS scheme, the liberalized remittance scheme, which is for individuals only, right? So individuals, including minors, they can remit money abroad up to 250,000 US dollar in. So as of the current limit, right? For current account and capital account, right? So earlier, like when we introduced this scheme on 4th of February 2004, and that time the limit was 25,000 US dollar only, right? तो ये एक सीक्वेंस आपका जो इसमें बनता है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, cost push inflation, so causes of inflation, bulletin inflation again, and hyperinflation. So let's say you know only one, ठीक है, आपका स्टार्टिंग ये दो हम जानते हैं, इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। So demand pull inflation is when aggregate demand increase, so it will lead to increase in prices equal to inflation आपका, ठीक है, पहला जो रहेगा, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं cost push inflation, increase in cost will lead to increase in prices again inflation, ठीक है। So occur when the cost of input increase, तो ये क्या होगा आपका cost push inflation होगा, ठीक है। तो दूसरे का A होगा, and caused by increase in aggregate demand, so आपका पहले का क्या होगा, बी होगा, ठीक है, फर्स्ट का बी होगा। अब पहले तो ये, इससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट का बी दूसरे का ए, फर्स्ट का बी दूसरे का ए, ठीक है। पहले तो हमारे पास पेयर ये बनता है, फर्स्ट का डी एलिमिनेट हो जाता है, फर्स्ट का सी एलिमिनेट हो जाता है, फर्स्ट का ए एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। So without knowing the other tools or other concept, other factors, you can solve the question, ठीक है। Bulletin inflation caused by adaptive expectations, often like in labor market dynamic. So थ्री का थ्री ही आपका होगा, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन इज एक्सट्रीमली रैपिड और आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। सो जहाँ पे इन्फ्लेशन के प्राइसेस क्या होते हैं आपका, इट इज मोर देन 10%, डबल डिजिट में आपका जो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, which of the following statement is incorrect about RBI guidelines on credit default swap, ठीक है। सो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फ्रॉम योर डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो डेरिवेटिव्स, देयर आर फोर टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स, आउट ऑफ फोर देयर इज वन टाइप विच इज कॉल्ड स्वैप, there are number of type of swap, जिसमें credit derivative swap is very important, credit default swap is very important, ठीक है। how it work basically, let's say there is a bank called SBI who gave loan to company X, ठीक है, worth rupees 50 crore for 10 years, ठीक है। अब अभी इस कंपनी की जो क्रेडिट वर्थिनेस थी वो काफी अच्छी थी, बट विद टाइम आपका हो सकता है कि इसके मतलब देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, राइट। तो जहाँ पे हो सकता है इसके बिजनेस रिस्क या फाइनेंशियल रिस्क की वजह से इसकी क्रेडिट वर्थिनेस वीक हो और उसकी वजह से ये डिफॉल्ट कर जाए। So to protect that particular one, what SBI will do, suppose that they enter with a XYZ Financial in a contract where XYZ Financial is providing assurance to SBI, if this company on this company X, if this company X default, so we will pay you remaining principal and interest amount. For that, you have to pay us some premium amount, ठीक है। उसके लिए आपको हमें क्या देना पड़ेगा, कुछ प्रीमियम आपका पे करना पड़ेगा, ठीक है। So now if this default event occur or this credit event occur, so XYZ will pay SBI. If it does not occur, so they'll receive this premium, ठीक है, ये इनका फायदा होगा, ठीक है। So now what SBI is doing, without transferring the ownership of this asset, they are transferring the risk, right? अब ये if you talk about the credit default swap, these are generally governed by RBI itself, right? तो अब पढ़ते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। CDS in India are regulated by IRDA, पहला ही स्टेटमेंट गलत है, it is regulated by RBI. Sorry. CDS contract can only be entered into by user to hedge a credit risk and cannot use for speculation. हाँ, this is true. यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा speculation नहीं हो रहा है, ठीक है। What SBI is doing, being a protection buyer, they are covering their credit risk, and XYZ is a protection seller. The minimum maturity period of CDS contract should be 3 months, and the maximum not should exceed the maturity of the reference obligation, ठीक है। This second part is true, but I am doubtful about this कि ये आपका minimum 3 months होना चाहिए, there is as such no provision, ठीक है। तो आपका
दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है, वो दैट डिपेंड ऑन द मेच्योरिटी ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कितना है उतने पे आपका रहेगा, ठीक है। द प्रोटेक्शन सेलर अंडर CDS, प्रोटेक्शन सेलर मीन्स आपका दिस XYZ should have a minimum net own fund of 500 crores, this is true as per the guidelines, ठीक है। तो अब आपका क्या होता है, कौन से गलत है हमें पूछा गया था, तो पहला गलत है एंड तीसरा गलत है इसमें, हाँ यस, तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। सो ऑप्शन 4, अब पहला और तीसरा को ही देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज वेरी क्लियर, ठीक है, इट इज रेगुलेटेड बाय RBI, नो डिस्कशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ऑप्शन 3, the maturity of CDS contract could be less than or equal to the maturity of the reference obligation but not more than, ठीक है, जैसे अगर 10 साल का वो लोन है तो 10 साल के लिए हो सकता है, the maximum maturity of CDS contract should not exceed the maturity of the reference obligation, तो वहां पे ऐसा कुछ आपका मिनिमम वाला जो क्राइटेरिया है that is not there in that particular case, ठीक है, तो वो उसमें आपका ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। In the trade receivable discount system process flow which is the first step, ठीक है, तो ट्रेड्स के बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया था अपने फंडामेंटल क्लासेस के अंदर, ठीक है। आई होप यू गाइस हैव गॉन थ्रू दोज पर्टिकुलर क्लासेस, बिना उनको गो थ्रू किए हुए मतलब इस भ्रांति में मत रहिएगा, ठीक है, कि आप मतलब काफी अच्छा स्कोर कर लेंगे विदाउट फाउंडेशन, नो गाइस। फर्स्ट मतलब देखो कंपाइलेशन आपको दिए गए हैं, जस्ट गो थ्रू दोस पर्टिकुलर वन, ठीक है, कंपाइलेशन को पूरा करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.75 1.50x में चलाओ वीडियोस को, ठीक है, कभी भी बैठ के देख लो, ठीक है, रात में आराम से हेडफोन लगा करके या कुछ भी। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू मेक नोट्स इन अदर्स, नोट्स यू विल गेट ऑन आवर वेबसाइट, वहां से मिल जाएंगे आपको, बट यहाँ पे इनको आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं ट्रेड्स का, तो ट्रेड्स क्या है, एक आपका बिल रीडिस्काउंटिंग आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बिल डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें जनरली आपका जो बेसिकली जो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, जो जैसे एक्सपोर्टर्स हैं, तो एक्सपोर्टर को कोई बिल मिला आपका जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट वो रिसीव करने वाला है, सपोज दैट ही इज गोइंग टू रिसीव दैट पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स। अब उसको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए आपका रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है, सो व्हाट ही विल डू, ही विल अपलोड दिस पर्टिकुलर बिल ऑन ट्रेड्स। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एक्सपोर्टर और जो भी आपका कंपनी है दे विल एक्सपोर्ट द बिल ऑन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म जहां पे फाइनेंसर क्या करते हैं, जो आपका बिल अपलोड हुआ है उसके ऊपर बिडिंग करेंगे, ठीक है। सो द फाइनेंसर बिड ऑन द इनवॉइस, ये तो पहला स्टेप नहीं हो सकता, ठीक है, बायर एक्सेप्ट और रिजेक्ट नो, द सेलर अपलोड द इनवॉइस ऑन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, द प्लेटफॉर्म मैच बायर एंड सेलर, ठीक है, तो पहला क्या होगा, फर्स्ट स्टेप विल बी दिस, ये आपका पहला होगा, ठीक है, दूसरा आपका होगा ये, ठीक है, बायर इन एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, ठीक है, तीसरा आपका फाइनेंस सॉरी दूसरा आपका होगा ये, एंड तीसरा होगा आपका ये, एंड चौथा होगा आपका ये, तो इस तरीके से ये जो सीक्वेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। So the seller upload the invoice on trades platform. The first step in trades process flow is that the seller, after supplying the goods or services to the buyer, upload the invoice detail on the trade platform. Okay? The buyer accept and reject the invoices. So once the invoice is uploaded by the seller, it is sent to buyer or for their acceptance and rejection. The financier bid on invoice, ठीक है, so जो भी आपका after the buyer accept the invoice, financier bid to discount the invoice, and the fourth one is platform match buyer and sellers team. So trades is not a typical marketplace where buyer and seller are matched. It is a platform where seller, buyer and financier interact in a secure and efficient way of for financing trade receivables, ठीक है। तो बेसिकली इसको बिल्ड करने का जो मोटिव था दैट इज कि जो भी ऐसे एक्सपोर्टर्स आपके हैं, जो सेलर्स हैं, उनको लाइक दे हैव अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, या उनके जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है आपका वो यहाँ से मीटअप हो सके। नेक्स्ट वन, which of the following is a key reason for gap between demand and supply of infrastructure financing in developing countries like India? So high interest rate on loan of infrastructure, no. Poorly structured public private partnership,
लिमिटेड लॉन्ग टर्म कैपिटल कैन बी अ रीजन, फंड्स के इशू हो सकते हैं, ठीक है. लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है. So what is the major gap? Like there is a limitations. मतलब जैसे developing nations में क्या होता है? They generally face fund crisis, right? So the most appropriate right answer, I'll go with option C. Yes, हाँ. So limited long-term capital infrastructure project require a significant amount of long-term capital, which is often scarce in developing countries. These projects usually have long gestation period and may not start generating returns for many years. Therefore, limited availability of long term capital is significant barriers, right? तो जैसे आपका कोई हाईवे प्रोजेक्ट है फॉर 5 years, कोई एयरपोर्ट है आपका 5 years, कोई डैम है आपका 5 years, तो जहां पे लाइक इनिशियल अगले 5 सालों तक आपका सिर्फ वी आर बर्निंग द मनी, इवन उसके बनने के बाद भी इट विल टेक टाइम, ठीक है. दीज आर द अल्टरनेट्स आपका, ठीक है. हम हाई इंटरेस्ट पे ले सकते हैं, ठीक है. हम आपका वी कैन मेक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे इंडिया में आपका होता है, ठीक है. एंड वी कैन इम्प्रूव द लॉन्ग टर्म जो अदर्स आपके एरियाज हैं, बट द मेजर चैलेंज व्हाट वी आर फेसिंग हियर दैट इज इशू ऑफ कैपिटल, ठीक है. तो दैट इज द वन. In the financial market, a system is used to facilitate the trading of cash and securities. In this system, a third party, typically a bank, act as an intermediary between the borrower and lender. This third party also provide guarantee to the lender that the borrower will return the borrowed security. It is an important tool for short-term borrowing and lending. The term and condition of these transaction are determined by the third party, ठीक है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका? It is known as tripartite repo, right? So what will be your correct answer? Tripartite repo, ठीक है. तो इसके ऊपर हमने एक पूरा डिटेल डिस्कशन आपका भी किया हुआ था, ठीक है. So I hope सबको याद होगा. So the third party, typically a bank, act as an intermediary between the borrower and lenders, ठीक है. जैसे repo होता है is RBI to commercial bank, there is no intermediary, but in case of tripartite repo there is a मीडिएटर, ठीक है, जो आपका ये ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करता है, वो जनरली प्रोवाइड गारंटी टू द लेंडर्स. नेक्स्ट वन, which of the following principle is not one of the fundamental principle governing insurance product? So principle of insurable interest is fundamental principle. Principle of indemnity is fundamental. Principle of loss prevention is not a principle, ठीक है. So principle of utmost good faith is right, ठीक है. So क्या होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ लॉस प्रिवेंशन, जो इसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है. सो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, द इंश्योर्ड मस्ट हैव अ लीगल इंटरेस्ट इन द preservation of the subject matter of the insurance, ठीक है. Principle of indemnity, the insurance undertake to put the insured in the event of loss in the same position that he occupied immediately before the happening of the event insured against. Principle of indemnity. Loss prevention आपका, while the loss prevention is an important aspect of insurance, many insurance policies will provide discount for safety measures. It is not considered as fundamental governing principle for insurance product. Principle of utmost good faith. Both parties in insurance have insured are bound with disclosures clearly and fully all the material circumstances regarding the subject matter of insurance, ठीक है. मतलब like जैसे मतलब सारे इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज एट द टाइम ऑफ पॉलिसी, ठीक है, जब हम लोग पॉलिसी आपका बना रहे होते हैं. नेक्स्ट वन, arrange the following scenario in chronological order which based on changes in market equilibrium due to a shift in demand, ठीक है. तो आपका increase in quantity demanded due to decrease in price. We have adjustment of price to clear the surplus. Increase in demand due to an external factor. Establishment of new market equilibrium, ठीक है. तो ये आपका लास्ट होगा, ठीक है. क्या है, किस ऑर्डर में आपका सिनेरियो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच बेस्ड ऑन द चेंजेस इन मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है. सो दिस विल बी योर लास्ट वन. सबसे पहले तो आपका फोर्थ वन किस में है आपका, सब में आपका ये लास्ट वन है, ठीक है. फर्स्ट थिंग. दूसरा आपका इंक्रीज इन डिमांड, आपका इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस. दिस विल बी, एक ऑप्शन हमारे पास ये होगा एडजस्टमेंट इन प्राइस ऑफ द क्लियर, नो.
increase, हाँ, so this will be the second one, increase in demand due to external factors, ठीक है. So आपका चौथा, then आपका तीसरा, चौथा, सॉरी, ओके, मतलब स्टार्ट विल दिस, ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट वन, ठीक है. तो तीसरे से स्टार्ट हो रहा है कौन कौन सा, दिस वन एंड दिस वन, राइट. तो अब ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है. देन इसके बाद आपका होगा पहला, तीसरे के बाद पहला, तीसरे के बाद पहला, दूसरा, हाँ. तो ऑप्शन वन विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, राइट. इफ यू study the sequence of market equilibrium, so you'll find these particular ones. So first one is increase in demand due to external factor. The first step in the sequence would be an external factor leading to an increase in demand. This could be anything from the changes in customer preferences to any increase in consumer income, right? Just a minute, huh? Increase in quantity demanded due to decrease in price. Take a second one. To eliminate the surplus, the price of the product would have to decrease. Then third one is adjustment of clear price to clear to surplus, and the fourth one is establishment of new market equilibriums, right? So अब इसके लिए ना you have to go through that unit, ठीक है. यहाँ पे आपका equilibriums को या market equilibriums को आपका मॉड्यूल ए के अंदर दशा में आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है. Which of the following is not a requirement of the FRBM, Fiscal Responsibility and Budget Management Act in India? तो FRBM को आपका स्टेब्लिश करने के पीछे का रीजन क्या था? 2003, इट केम इफेक्टिव फ्रॉम 2003 टू डिक्रीज द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट. So government should reduce the fiscal deficit. It is requirement. Government should eliminate the revenue deficit. It is also part of this. A government should ensure a decline in public debt. This is also lead with that one. The government should provide subsidies to all sector of the economy. It is not necessary. ठीक है, सारे sectors को हम लोग आपका subsidies नहीं दे सकते. ठीक है, subsidies are generally bound to those sectors which require, like agriculture, आपका manufacturing, आपका जो कहीं ना कहीं those who have like we can say importance in term of overall economic development, right? So that is the one. Next one, arrange the following concept related to union budget deficit, a sequence from their broader to narrower definition, ठीक है. तो सबसे बड़ा क्या होता है आपका बजटरी डेफिसिट, एंड लास्ट क्या होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट. बजटरी डेफिसिट से स्टार्ट होगा, प्राइमरी डेफिसिट पे खत्म होगा, लाइक. सो बजटरी डेफिसिट पे से स्टार्ट होगा, प्राइमरी डेफिसिट पे खत्म होगा, मतलब तीसरे से स्टार्ट होगा और आपका दूसरे पे खत्म होगा. तो पहला ही सही होना चाहिए, तीसरा इसमें और कोई है नहीं, ठीक है. देखो इस तरीके से आपको वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूज करना होगा दिमाग को, ठीक है. और चार ऑप्शंस रहेंगे और इस तरीके, और बिलीव मी गाइस, ऐसा मतलब बहुत बार हुआ है कि मतलब 90% टाइम ऐसे क्वेश्चंस आपका जो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है. 2000 अक्टूबर 2023 वाज द टाइम 100% सॉल्व हो रहे थे, ठीक है. सो लाइक फर्स्ट वी हैव बजटरी डेफिसिट, देन वी हैव आपका फिस्कल डेफिसिट, देन वी हैव रेवेन्यू डेफिसिट, देन वी हैव प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है. सो बजटरी डेफिसिट आपका जो नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस, ठीक है. फिस्कल डेफिसिट विद इज लिंक विद जीडीपी, ठीक है. So the fiscal deficit is more specific concept and represent the excess of total budget expenditures over a total budgeting receipt, excluding borrowings within the fiscal year. Revenue deficit आपका, revenue deficit is revenue income and revenue expenditure. Primary deficit is overall deficit. Primary deficit is the most specific concept and is calculated by subtracting interest payments from the fiscal deficit. This represents the amount of new debt required, excluding the servicing of existing debt also, right? Next one, arrange the following events in the chronological order. They took place in the history of economic planning, ठीक है. So again this is very nice question और आपसे बन जाएगा, ठीक है. कुछ चीजें आपको यहाँ से लेनी है, ठीक है. जैसे formulation of first 5-year plan. A first 5-year plan timing was 1951 to 56, ठीक है. तो अब इससे पहले आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मिक्स इकोनॉमी. मिक्स इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन कब हुआ था? ड्यूरिंग द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है. तो अब इट इज अराउंड 1940s आपका, आप मान सकते हैं, सॉरी
हाँ 1940, 3940 आपका, चलो 1940 लेके चलते हैं, ठीक है। सो दैट इज द ईयर जब आपका मिक्स इकोनॉमीज इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ था, और इंडिया ने भी यहीं से अडॉप्ट करना स्टार्ट किया था। स्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है, 15 मार्च 1950, ठीक है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, तो लिबरलाइजेशन कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1991। ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल फोकस इन द इकोनॉमी, ठीक है। सो दिस इज ड्यूरिंग सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, ये आपका सेकंड 5 ईयर प्लान। अगर अगर आप देखते हैं 1956 टू 1961, व्हाट वाज द मेजर एजेंडा ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राइट। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? इट इज अराउंड 1960s, आप मान के चल सकते हैं इसको, ठीक है। अब मैच करते हैं, तो इसमें सबसे पहला हमारे पास क्या है आपका? सबसे पहला आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ मिक्स इकोनॉमी, और लेटेस्ट वन आपका क्या आएगा इसमें? 1991, फोर्थ वन आपका, ठीक है। तो दूसरे से स्टार्ट हो रहा है और फोर्थ पे खत्म हो रहा है, दूसरे से स्टार्ट हो रहा है फोर्थ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, दूसरे से स्टार्ट हो रहा है फोर्थ पे खत्म हो रहा है। तो अब ये दो ऑप्शन तो हटा देते हैं, ठीक है, इन दोनों में से देखते हैं आपका, ठीक है। सो सबसे पहले ये, ठीक है, आपका अगर इसको लें तो दूसरा, फिर पहला आपका फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान, लेकिन इससे पहले क्या हुआ था आपका? ये प्लानिंग कमीशन बना था, ठीक है। तो दूसरा फिर तीसरा, ठीक है, दूसरा फिर तीसरा, मतलब ये भी हट जाएगा आपका, दूसरा तीसरा पहला चौथा पांचवा। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस। अंडरस्टूड कैसे आपको इन क्वेश्चंस को टैकल करना है, एंड इट इज फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। मतलब क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, अगर आप अपने एफर्ट्स मारते हैं तो वो आपको हेल्प करेंगे डेफिनेटली आपके स्कोर में, ठीक है। Which of the following activities is most closely associated with the culinary sector of the economy? So culinary sector आपका, which is part of subsector under the service sector. Last time we discussed a question based on quaternary sector, ठीक है, और ये सारे sectors हमने discuss भी किए हुए हैं past में, ठीक है। So if you talk about the culinary sector, it is high decision making, right? So high level decision making, that means option 4 will be correct answer for this particular one. Quickly go through this. I'll take 1 minute. Hello, हाँ, yes. So match the following correctly, right? So economic development, economic growth, development growth, ठीक है। तो पहले तो हम ये समझते हैं डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। डेवलपमेंट, ग्रोथ इज ऑलवेज क्वांटिटेटिव इन नेचर, ठीक है। जैसे जीडीपी इज द बेस्ट इंडिकेटर टू कैलकुलेट द ग्रोथ ऑफ अ नेशन, राइट। जैसे जीडीपी में होता है ना, वी जस्ट केयर अबाउट द ओवरऑल आउटपुट, उस ओवरऑल आउटपुट से कितने लोगों का भला हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। लाइक यू कैन सी द डिफरेंस, जीडीपी वाइज इंडिया इज वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, ये आपका जीडीपी मींस ग्रोथ वाइज, ठीक है। दूसरी तरफ आपका अगर आप बात करते हैं डेवलपमेंट, ठीक है, सो डेवलपमेंट के लिए आपका जो पैरामीटर्स हैं, लाइक वी हैव एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो एज पर द रीसेंट एसडीआई इंडेक्स, इंडिया रैंक अराउंड 129 और 130, तो इस रेंज में आपको। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, बहुत बड़ा डिफरेंस है, देखने में सामने एक से लगते हैं। तो डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव इन नेचर, इट केयर अबाउट द ओवरऑल वेलबींग of the society, of the individuals, those who are living in an economy, right? Development, ठीक है, विकास का मतलब पूरा सर्वांगीण विकास, सब जो भी लोग आपके रह रहे हैं। ग्रोथ में आपका क्या होता है? जस्ट आउटपुट या जो नंबर्स हैं उनके ऊपर हम लोग बात कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है सर? तो क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? सो डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड बेस्ड कॉन्सेप्ट एंड इट्स अ नैरो कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सो ये मतलब आपस में भी मैच करेक्ट है जितना मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव मेजर फोकस ऑन दिस जीडीपी, तो आप आपका ये हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब दूसरे का इज ए एंड पहले का इज बी, तो पहले का बी कौन सा स्टार्ट हो रहा है? यस, तीसरे का सी एंड डी, ठीक है। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। बहुत आसान था, ठीक है। नेक्स्ट वन,
The demand curve is a fundamental concept in economics that represent the relationship between quantity of a goods consumer are willing to consume or buy at its price. There are various forces that determine the shape and position of demand curve. These include income level, ठीक है, जैसे अगर लोगों की income level बढ़ेगी या घटेगी, so it will make direct impact on their consumption, right? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आपका, अगर उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होंगे, सो देयर विल बी अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइट? प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स आपका, जैसे फॉर टी इट इज कॉफी, ठीक है, फॉर पेट्रोल डीजल, रिलेटेड आपका, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है। एक्सपेक्ट और इसके अलावा सब्सटीट्यूट गुड्स आपका, दैट इज सब्सटीट्यूट ऑल्सो, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री इज लाइक जैसे पेट्रोल इन कार, ठीक है, डीजल इन कार, सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। So this factor where a change in price of goods or services lead to a change in quantity demanded, keeping other factors constant, it is law of demand itself, ठीक है। ये definition जो है, ये किसकी definition है आपका? It is a definition of law of demand, ठीक है। So option 3 will be right answer for this one. Very simple one, right? Next one, which of the following are correctly matched? So you have to match these particular one correctly, ठीक है। So based on economic phases or business cycle, ठीक है। So expansion phase, then we have peak, then we have contraction and we have trough. So what was the chart, कल हमने discuss भी किया था, ठीक है। So it is like something like this, right? तो अब this is your expansion phase, ठीक है, this is your peak, this is your contraction and this is your trough. फिर आपका expansion, peak, trough, ठीक है। तो end of expansion lead to peak, एंड ऑफ पीक लीड टू कॉन्ट्रैक्शन, एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लीड टू ट्रॉप, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये रहेगा। तो एक्सपेंशन इज, अब यहां देखते हैं, मार्क एंड द एंड डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इंक्रीजिंग एंड रीचिंग टू मैक्सिमम, सो दिस इज अ एक्सपेंशन फेज, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम द पीक, सो इट विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। Economic activity are growing, it is expansion, there are economic activity is increasing and reaching to maximum, so this will be peak, sorry, ठीक है। ये आपका peak होना चाहिए, expansion आपका होना चाहिए, growing में आपका है, ठीक है। Mark the end of decline economic activity, so it should be mark the end of declining economic activity, so it should be draw. तो पहले का draw means fourth का will be your A, ठीक है, fourth का will be A, ठीक है। पहला अगर हम इस तरीके से इसको देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इज आपका, पहले का देखते हैं, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इज वेयर आपका डी, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज डी, पीक इज, पीक कहाँ पे है, बी, देन वी हैव सी ए, ठीक है। सो डी बी सी ए, डी बी सी ए, दैट मीन्स ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो 1 विल बी द करेक्ट मैच फॉर द गिवन डेटा। नेक्स्ट वन, which of the following statement is incorrect about the fiscal policy of India? Fiscal policy of India, right? So budgetary fiscal policy, ठीक है, very important topic. Again, monetary policy. There was lots of question in last examination about the monetary policy. So this year you can expect from a fiscal policy, and even one suggestion is go for the major highlights under the Union Budget 24-25, especially that standard deduction got increased from 50,000 to 75,000. Last year there was a question based on standard deduction, तो अभी ये 75,000 न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है। तो 0 to 3 lakh, 3 to 7 lakh, 7 to 10 lakh, 10 to 12 lakh, 12 to 15 lakh, more than 15 lakhs, right? So that tax slab. इसके अलावा आपका there is a change in capital gain taxes, or there decrease in custom duties of gold and others. So there was some major highlight, ठीक है। मेजर आपको देखने हैं। सो फिस्कल पॉलिसी इज अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय, you have to find out incorrect statement first of all, team. Fiscal policy is a mechanism used by the government to influence the economic conditions through spending and taxations, true, ये सही है। यूनियन बजट प्रेजेंट एनुअली इज अ मेजर पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ट्रू। The primary objective of fiscal policy in India to do not include the reduction of income and wealth inequality, it is, तो ये गलत है आपका, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, वी हैव टू फाइंड आउट रॉन्ग स्टेटमेंट। तो पहला ये, फिस्कल पॉलिसी हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन और स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, ऐसा नहीं है, इसके थ्रू भी वी कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन, वी कैन, और स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी इज द प्राइमरी वन, राइट।
तो बोथ आपका तीसरा इन चौथा. So option 4 will be correct answer for this particular question, right? Next one. Okay, this is it. तो guys ये आपका एक और सेट हमने जो आज प्रैक्टिस किया. In every set we generally discuss 20 to 25 questions. So I hope you guys are enjoying these particular question and you guys are following on regular basis, right? So and apart from this, if you need any other help, so you can also ask your queries. And there are some module wise session which are already uploaded. Module C and D I are already done with these two modules. Disha ma'am is going to cover module A in tomorrow's sessions, which is Sunday. So do participate in that particular one also, right? Very soon ma'am will come with module B as well, right? तो इस तरीके से अगर आप लेके चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को, so that will be very helpful. Again I'm saying guys, this is my personal experience with IIBF. IE and IFS paper is quite like बहुत बड़ा subject है if you'll study through keywords, and fundamental is must for this particular subject. ठीक है, believe me guys. So at least like we have done compilation of subject. ठीक है, at least there are few topics. अगर आपको दिक्कत हो रही है उन टॉपिक को आइडेंटिफाई करने में, so you can mention into the comment section. So I'll do a video for all of you. कौन कौन से टॉपिक को आप जरूर देखें before गोइंग योर एग्जामिनेशन. फंडामेंटली आई एम टॉकिंग. ठीक है, कॉन्सेप्ट एमसीक्यू वाइज प्रैक्टिस वाइज तो आपको हर कोई करना पड़ेगा. ठीक है, तो और फर्स्ट पेपर है. ठीक है, और कहीं ना कहीं मतलब चैलेंज उसके बाद आपके लिए एक बड़ा चैलेंज वेट कर रहा है उसके अगले वीक में, जहाँ पे 2 पेपर एक साथ आप लोग देने वाले हैं. ठीक है, बट हाँ ये जो चैलेंज है ना INIFS में, इफ यू डू गुड तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा आपके मोरल को मतलब इंक्रीज करेगा. ठीक है, दैट विल आप मोटिवेटेड फील करेंगे. ठीक है, वो मतलब यू विल फील लाइक टेंस लाइक जैसे आपने बैंक का एग्जाम दिया था ना, क्रैक करता था, या उस समय की जो एंजाइटी होती थी, सेम थिंग यू विल फील इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम ऑल्सो, राइट? और यहाँ पे तो रिजल्ट भी एकदम से क्लिक पे आ जाता है. वंस यू विल सबमिट योर आंसर मॉक टेस्ट, सो कम यू विल गेट रिजल्ट. ठीक है, बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट. ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक चीज रहती है. तो आई विल सजेस्ट कि लाइक देयर आर फ्यू डेज रिमेनिंग. ठीक है, एंड ट्राई योर बेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम कीजिए. ठीक है, और अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप अप्रोच कर सकते हैं, राइट? सो आज के लिए इतना ही करेंगे. दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. डू शेयर योर फीडबैक, and if you like this session, please do share with your friends also, so those who are preparing for INIFS paper or upcoming JIIB examination. Okay, so this is it. Bye bye, take care all, have a nice day, and all the very best for your preparation guys. Thank you.